I think we laid down the groundwork in yesterday's class, wherein we talked about what is right to religion, what is contained in Articles 25 to 28, and in general, we also discussed a brief overview ki, what is the right to religion, what all it entails, and most importantly, what are the exceptions to it, or like in what situations can right to religion be restricted under Articles 25 or 26. Okay? I think I also gave you a brief understanding of um, the test that was laid down in the Shirur Mutt case. That is the test of essential religious practice. Okay. So we are going to pick our discussion from there. We will see a few more cases, a few more landmark cases on the very issue of right to freedom of religion. Most of them will deal with, just the issue of essential religious practice in itself. कि essential religious practice जो test है, वो कैसे determine करेगा, ठीक है? मतलब in a lot of other cases after Shirur Mutt, the court clarified कि how will essential religious practice test actually apply in these cases. Okay, so we'll finish that discussion, and then I'll also be talking to you about two landmark cases which are fairly recent. That is one, the case of triple talaq judgment, and then we'll talk about the Sabrimala case. Okay, so that is going to be the scope of discussion for today. If there is time, then we might also start with the Bare Act for Article 29 and 30. So we'll see about that. Okay, so I think this is the part which we have already covered, and this is wherein we are supposed to start from. Okay, so now coming to religious practices and which religious practices will be protected under Article 25. ठीक है? तो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था कि शिरूर मठ के केस में दे केम अप विद द टेस्ट कॉल्ड द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, जिसके हिसाब से only those practices will be protected under Article 25 which are essential to the religion. ठीक है? Now, what is essential to the religion? That was clarified in later cases as well. Okay, so the 7-judge bench in the Shirur Mutt case in the year 1954 laid down this test of essential religious practices, which till date is made applicable by different judgments of the court, as you will see in both the cases, in Sabrimala as well as in Shaira Bano. The issue was ki whether the practices that are involved therein, whether they form part of the essential religious practice or not. Okay? Thankfully, in both the cases, the Supreme Court held that neither triple talaq nor excluding women from entering the Sabrimala temple constitute as essential religious practices. Okay, but again, the reasoning is a little flawed, but we'll come to that a little later. Okay, so Shirur Mutt is the first and the most important landmark case on Article 25. Then we move on to other cases. ठीक है? अब शिरूर मठ के केस में कोर्ट ने थोड़ा सा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में और बताया. उन्होंने कहा कि what constitutes as essential part of the religion is primarily to be ascertained with references to the doctrine of that religion itself. ठीक है? तो उन्होंने यही बोला कि क्या essential है, ये religion के हिसाब से देखा जाएगा कि what is the doctrine of the religion, and then it will be decided ki whether that practice is essential to that religion or not. Okay. And then we have the second important case 4 years down the line. That is the case of Devaru versus State of Mysore. Okay. पूरा नाम है श्री वेंकटरमन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. इस केस को इसीलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं बिकॉज इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ द कोर्ट्स. ठीक है, कि अब हमें अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डिटरमाइन करनी है तो कोर्ट्स आर द वन विच विल बी डिटरमाइनिंग दैट. ठीक है, क्योंकि रिलीजन के लिए क्या एसेंशियल है क्या नहीं, इस पे somebody will have to decide, and the role of the courts is more in that case, and this was said in the case of Devaru versus State of Mysore, जहाँ पे court emphasized upon the role of the court in determining whether the practice is essential or not. ठीक है, तो इसको भी काफी criticize किया जाता है क्योंकि theology के matters में the court should not be a judge because the court is not a master of theology. Okay, but nevertheless the whole test is based on a very flimsy ground, so anyway the religion cannot be, you cannot allow the religion to determine what is essential to them, because
it's a very unlikely that they will find anything not to be essential to that religion. So the onus went on to the courts, that the courts will be deciding what practice is essential and what practice is not essential. Okay, so that's the second important case, that is the judgment of Devaru versus State of Mysore. ठीक है, फिर और भी कई सारे judgments हैं, so that there are a couple of them which if you read any case law on article 25 to 28, then you will anyway be looking into those. So the third important case is the case of Dargah Committee Ajmer versus Syed Hussain Ali. इस केस में कोर्ट ने कहा था कि for a practice to be essential religious practice, it must be regarded so by the religion itself. ठीक है? So as you can see, after the Shirur Mutt case, in several other judgments, the court has tried to determine what exactly is essential religious practice. ठीक है? Or to word it a little better, not what is essential, but how will we determine what is essential. ठीक है? तो देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में कोर्ट ने कहा कि ultimately it is the role of the courts that they will be deciding what is essential. दरगाह कमेटी के केस में कोर्ट ने कहा कि क्या essential है ये हमें religion के हिसाब से decide करना पड़ेगा. ठीक है? It must be regarded so by the religion. If the religion regards that practice as essential, then that practice has to be considered as essential. Okay? इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि any religious practice which has sprung merely from superstitious beliefs will not be regarded as essential religious practice. So they basically said that any practice which is superstitious in nature, that cannot, be regarded as falling under the test of essential religious practice for that religion. Ma'am, what does this line, it must be regarded so by the religion, means? So they are basically saying that the religion itself should consider it to be essential. तो अब आप ये कैसे determine करोगे, right? So again, ultimately the whole, as I said, इसलिए मैंने आपको कल थोड़ा background दिया था कि the whole doctrine is flawed in itself, because how will the courts determine what is essential to the religion or not? ठीक है? So in multiple cases they've tried to figure it out, but I'm not sure if they have convinced themselves with the reasoning. ठीक है? तो वो यही बोल रहे हैं कि religion के लिए क्या important है. कहीं पे they are saying कि it is the courts who will be deciding. See, ultimately it is the court only which will be deciding. But in cases they are just clarifying कि what are the guidelines for that. कि ठीक है, courts को अगर determine करना है कि कोई practice essential है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे. Whether they will be looking at it from a logical point of view कि whether this practice should form part of religion or not, or will they be looking at it from the perspective of the religion कि उस religion को जो लोग follow करते हैं क्या उन्हें वो practice essential लगती है. ठीक है? तो दरगाह कमेटी के केस में उन्होंने यही बोला कि courts जब decide करेंगे कि whether a practice is essential or not, उनको religion के angle से decide करना है कि जो लोग उस religion को follow करते हैं, the scholars of that religion, the books of that religion, whether they regard it as essential or not. I hope it's clear. All right, ma'am. Yeah. But again, I will repeat it again, that the doctrine stays heavily criticized for exactly these reasons कि आप नहीं decide कर सकते कि किसी religion में क्या essential होगा और क्या नहीं. ठीक है? So I hope you remember that discussion. We might have that discussion later when we talk about the Sabrimala case and the Triple Talaq case. Okay. Then in another important case, that is Sardar Sayyidna Saifuddin Sahib versus State of Bombay, कोर्ट ने अगेन थोड़ी बहुत और बातें बताई कि ईआरपी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो उन्होंने कहा कि वी विल लुक एट द टेक्स्ट एंड द टेनेट्स ऑफ द रिलीजन. ठीक है? कोर्ट्स को जब डिसाइड करना है एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं किसी रिलीजन की, तो दे विल बी लुकिंग एट द बुक्स एंड द टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन, ऑफ वेल नोन स्कॉलर्स ऑफ द रिलीजन, कि उनका क्या मानना है उस प्रैक्टिस के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है? So that is how the courts have over a period of time tried to determine how ERP will be recognized, but the problem continues, as we will see in the two landmark recent cases that we'll be discussing, कि वहां पे भी जिन judges की dissent थी, उनका मानना था कि ये practices essential हैं. ठीक है? So it's a very interpretation based thing, and that to the interpretation of the judges कि whether a practice
has to be regarded as essential or not. ठीक है. फिर हम आते हैं अनदर केस, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस आचार्य जगदीश्वर आनंद. इस केस में उन्होंने एक और नई बात बोली कि हम ईआरपी कैसे डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, तो वी विल हैव टू सी कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिसको अगर हम हटा दें तो दैट विल चेंज द नेचर ऑफ द रिलीजन, देन इट कैन बी सेड दैट इट इज एसेंशियल टू दैट रिलीजन. ठीक है, अगेन ज्यादा सेंस नहीं बनेगा आपको, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली इट इज द कोर्ट एंड द जजेस हु आर सीइंग whether the nature of the religion is changing or not, and what exactly do you mean by the nature of the religion in itself changing. ठीक है, so practically of course the reasoning determines of the majority of the judges and the dissenting judges कि उन्हें क्या लगता है, उनकी क्या reasoning है. ठीक है, so ultimately the problem still exists, but इस केस में कोर्ट ने at least ये बोला कि the test is to find out whether the nature of the religion will be changed without that part or practice. If taking away the practice results in fundamental change in the character of that religion, then it is essential to that religion. Okay. फिर शायरा बानो का केस, ये अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में. ये आपको याद होगा, दिस इज द ट्रिपल तलाक केस. इस केस में मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने उनका ओपिनियन था कि जो ट्रिपल तलाक है या तलाक बैन जो है ये एसेंशियल नहीं है टू इस्लामिक लॉ. ठीक है, they also said a lot of things. They said that the practice is manifestly arbitrary and unconstitutional. But yeah, one of the points of discussion was whether triple talaq is essential under Islamic law or not. Okay, so for that, majority of the judges are of the opinion that no, it is not essential. The two judges that is those dissented, that is Justice Keher and Justice Abdul Nazir. उनके हिसाब से the practice was essential, and in general personal laws में courts को नहीं जाना चाहिए. That was their understanding. So these are some of the important cases, and there are quite a few which I don't think is necessary to get into at this stage. If there is a case law on right to religion, अगर कुछ आता है recent, तो probably it might become important. Okay, because you already पूछ चुके हैं 2020 के पेपर में when they asked about the triple talaq judgment, then they did talk about right to religion, and the area was more or less asked already. So I don't think it can be asked this soon again unless something prompts it, like if there's something recent that's happening. Okay. Now we come to another case, that is the case of Reverend Stanislaus versus State of Madhya Pradesh. ये आपको 1-1.5 साल पहले से भी याद होगा, I think. So I hope you remember that there was a time wherein love jihad was too much in the news, right? और अगर आपको याद हो कि कुछ स्टेट्स थे जैसे आई थिंक यूपी, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा मोस्टली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स which actually passed very hasty legislations on forceful conversion etc. ठीक है, तो ये issue अभी का नहीं है. This is an issue which has been there since forever. The Hindu-Muslim thing is there since the partition of the country. So even in 1977 court had to deal with this matter. ठीक है, तो उस टाइम पे there were 2 laws which were challenged. मध्य प्रदेश का लॉ था and उड़ीसा का लॉ था. So the Dharma Swatantrata Adhiniyam 1968 and Orissa Freedom of Religion Act 1967, they were challenged before the court. ठीक है, similar provisions थे इनमें जो अभी वाले laws में हैं. तो उस केस में कोर्ट ने कहा कि these are valid legislations, reason being that they prohibit forceful conversion. ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि everybody has a right to propagate their religion, but हमने ये भी देखा था कि propagating your religion does not include a right to forcefully convert somebody to your religion. ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि the laws are constitutionally valid and they upheld the validity of these laws, citing that right to propagate religion does not include right to forcefully convert somebody. Okay, so it was important when the love jihad legislations were going on, but I think वो थोड़ा outdated issue हो गया. So I don't think particularly उतना कुछ relevance अभी के टाइम में है, but आपको पता होना चाहिए तब भी ये सारे landmark cases. Okay. Now we come to the exceptions कि freedom of religion article 25 के अंदर जो दिया हुआ है उस पे क्या क्या restrictions लग सकते हैं या फिर किन किन grounds पे restrictions लग सकते हैं. ठीक है, तो हमने देखा था कि this is one of the very few articles in the constitution which starts with restrictions only. ठीक है, आप article 25 देखोगे
तो वो स्टार्ट ही ऐसे होता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू रिलीजन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो इट इज सब्जेक्ट टू दीज टू कंडीशंस। पहला, 4 हमने देखे थे, 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं, public order, morality, health, and other provisions of Part 3 and Article 25, Clause 2। ठीक है, अगर आपको याद हो 25(2) ए बात करता है कि अगर स्टेट चाहे तो इट कैन मेक अ लॉ रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सेक्युलर एक्टिविटीज ऑफ द रिलीजन, एंड 25(2) बी बात करता है कि सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन आपको लाना है, या फिर टू open the gates of Hindu institutions to all sections of the society, तो ऐसे केस में the state can make a law। ठीक है, so very important restrictions, conceptually you should be very clear on what kind of restrictions or on what grounds restrictions can be imposed on the fundamental freedom given under Article 25। okay, there was a case of, हाँ, शफिया जहान भी था। शफिया जहान was actually not a case under Article 25। okay, so आप जो केस बोल रहे हो वो आई थिंक हमने आर्टिकल 21 में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था। दैट इज द केस ऑफ शफिया जहान वर्सेस KM अशोकन। ठीक है, इस केस में मतलब ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन थोड़ा सा आई थिंक वाज implicit, but उस बात पर the discussion was not there। This is also known as the हादिया केस। इस केस में इशू ये था कि जो शफिया जहान थी, she was an adult woman who was a Hindu, but then she converted to Islam and she got married to a Muslim man। Okay, and her father, being a typical Indian father, went to the court saying he basically filed a habeas corpus writ petition before the Kerala High Court, saying that her daughter is missing, so the court should find her for him। So when the court looked into the issue, they found that Shafia Jahan is an adult woman who has, out of her own free will, converted to a religion and married somebody, and provided that she is an adult during all of the process, even then the Kerala High Court sent the woman to a woman's protection home, saying that she doesn't know what she's doing. So essentially it was a classic case of state paternalism, wherein they just believed that an adult woman does not know that she's converting to a religion, and what are the consequences of it. So then the matter came to the Supreme Court in 2018, and therein the Supreme Court heavily rebuked the decision of the Kerala High Court, and the court re-emphasized and reiterated that an adult person has a right to marry under Article 21. An adult person has the right to decide which faith to follow। Okay, so essentially उनकी जो reasoning थी वो पूरी इस बात पे based थी कि शफिया जहान is an adult woman and there is absolutely no evidence that she was coerced into doing anything। So this is why there is no habeas corpus petition that can lie in the present case, because the woman has decided to do what she wants to do out of her own free will। ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 25 का उतना डिस्कशन नहीं था। इट वाज मोर ऑन द आइडिया ऑफ what an adult person can and cannot do। So it was more a case on Article 19 and Article 21। okay, but हाँ ठीक है, Article 25 में भी important है। but Article 25 में वो बस इसीलिए important था because of all the news channels who were parading that this woman does not know that what she is doing, it's a case of love jihad, she has been forced by ISIS and whatnot। ठीक है, so I think it was more of a media issue rather than a court issue। ठीक है, बट हाँ काफी इंटरेस्टिंग केस है, आपका कभी मन हो तो पढ़ना जजमेंट। इट्स क्वाइट अ गुड जजमेंट टू रीड, बेस्ड ऑन वेरी बेसिक लॉजिक एंड कॉमन सेंस। ठीक है, ओके, सो या व्हाट वाज आई टॉकिंग? आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 25। ओके, अब आर्टिकल 25 के जो एक्सेप्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, इनमें उतनी ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जनरली courts tend to refrain themselves from meddling too much into matters of religion। ठीक है, particularly इस ground पे तो बहुत ही कम वो intervene करने का try करते हैं। They want the legislature to make laws on it so that the courts don't have to step in and give a judgment on issues which are very sensitive to most of the population of India। तो उतनी ज्यादा I don't think
हमें jurisprudence मिलेगी, but then we do have 2 judgments and I'm sure one other very important judgment might be coming very soon, which is a reference case जहाँ पे कई सारे religion के कई सारी discriminatory practices are currently under challenge, ठीक है? But सबरीमाला के केस में court was looking into the practice of excluding menstruating women, not menstruating, 10 to 50 years aged females from being entered into the Lord Ayappa का temple. ठीक है? तो उस केस में कोर्ट ने कहा कि this goes also against the morality. ठीक है? तो कोर्ट ने ये बोला, majority of the judges का ये मानना था कि morality जो term है जो आर्टिकल 25 में यूज हुआ है, आर्टिकल 25 and 26, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है? क्योंकि मोरालिटी कैन बी वेरी सब्जेक्टिव. आप सबको पता है कि मोरालिटी, what you may consider as moral, I may not consider it as moral, or what I may consider it as immoral, you may consider it as moral. So morality का कोई ऐसे basic standard नहीं होता है कि you can determine what is the morality of the society. तो कोर्ट ने बोला कि मोरालिटी जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है आर्टिकल 25 में, उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या ठीक है. ठीक है? Not according to what you believe in or what I believe in or what one religion believes in. Constitutional morality is something which is based on the basic features of the constitution कि constitution में exactly क्या लिखा हुआ है. ठीक है? तो उन्होंने उस basis पे भी कहा कि excluding women in general from entering into a temple also goes against the very idea of constitutional morality. ठीक है? इसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा she dissented और उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिलीजन के केसेस में आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो. आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट मोरालिटीज हो सकती हैं. ठीक है? तो उनका डिसेंट भी काफी इंटरेस्टिंग था, बट मेजॉरिटी ऑफ द जजेस सेड कि मोरालिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ओके, सो दैट वाज थोड़ा सा डिस्कशन ऑन द एक्सेप्शंस. ठीक है? 25(2) तो आपको पता ही है, 25(2) A and B. Make sure that you are thorough with that because we have already discussed it in the last class. Okay, now there are a few more judgments on the issue of restrictions. तो पहला केस है SP Mittal versus Union of India का. इस केस में there was a law which was made, that was the Auroville Emergency Provision Act of 1980. ठीक है? तो it was made to manage this institution of Auroville, which I think is in Pondicherry. तो उनका मानना था, उन्होंने उसको चैलेंज किया on the grounds कि this is unnecessary interference into our religion. तो कोर्ट upheld the constitutional validity of this law और कोर्ट ने कहा कि making a law for managing secular aspects of a religion is protected by Article 25(2)A. ठीक है? हमने देखा है 25(2)A में लिखा हुआ है कि स्टेट अगर कोई लॉ बनाती है फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सेक्युलर एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिलीजन, then that does not violate Article 25(1). ठीक है? तो similarly the court upheld this particular law and said that it is not affecting Article 25(1) because it is protected under Article 25(2)A. Okay. Similarly, we have Shri Adi Vishweshwara of Kashi Vishwanath Temple versus State of Uttar Pradesh. इस केस में भी एक यूपी का लॉ था called the UP Shri Kashi Vishwanath Temple Act 1983. ठीक है? तो इस लॉ के अंदर it divested the pandas of their right to manage the temple and receive offerings. ठीक है? So they basically were dealing with the management of the temple and who can manage it. And जो वहाँ सदियों से मैनेज करते आ रहे थे द pandas, उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि only they are the ones who can be managing the temple. ठीक है? So this law which provided for such kind of a provision was also held not violative of Article 25. ठीक है? उन्होंने कहा कि 25(2)A के अंदर इस टाइप का law can be made and that is why it is not violating Article 25 Clause 1. Then we have N. Adityan versus Travancore Devaswam Board 2002. इस केस में भी some legislation was challenged जहाँ पे the court basically said कि if a person is well qualified to perform the puja, then the person cannot be denied appointment as a priest because he is not a Brahmin. ठीक है? तो essentially ये जितने भी cases हैं
दे आर बेसिकली ऑन दैट इशू ओनली कि अगर कोई सेक्युलर मैटर है या कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मैटर है, इफ दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द लेजिस्लेचर by making a law or by making rules or regulations, then that will not violate Article 25(1) at all. ठीक है, एक केस रह गया था. There's another case of गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1983. इस केस में कोर्ट ने कहा था, और जैसा कि हमें पता भी है कि आर्टिकल 25 में वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इज पब्लिक ऑर्डर. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि इफ द एग्जीक्यूटिव हैज ऑर्डर्ड शिफ्टिंग ऑफ ग्रेव्स from one place to another because of public order, then shifting of graves in itself cannot be said either to be contrary to Quran or un-Islamic. तो उन्होंने कहा कि this can be allowed as freedom to religion is subject to the issue of public order. ठीक है, तो Ghulam Abbas is another important case which is on the issue of the restriction of public order being made applicable. ओके, सो ये कुछ केसेस थे, बहुत सारे केसेस हैं और इनके फैक्ट्स भी कहीं सारे कॉम्प्लिकेटेड है, हमने बहुत ही ब्रीफ में देखा है. बट आई थिंक अनलेस हमें कोई बड़ा जजमेंट मिलता है ऑन राइट टू रिलीजन, इट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल टू गो इनटू टू मेनी डिटेल्स ऑफ दीज केसेस. ठीक है, इट विल बी इंटरेस्टिंग आई एम श्योर, बट आपको थोड़ा वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या आ सकता है. ओके, सो मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट इतनी फाइंडिंग्स इनकी पता हो, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स यू आर एबल टू आंसर दैट. ओके, if a case law comes, if a big case law comes, then of course we'll be dealing with a lot more. Ma'am, I have a small question from the last case. Hanji. Ma'am, in the Article 16(5), ma'am, like the state has the power to appoint the head of religious domination who belong to that particular religion. So in the case of N. Adityan, you said that like a Islamic person cannot be appointed. So no, wouldn't it... the issue was that a मतलब जरूरी नहीं है कि only a Brahmin person can be performing the puja in a particular temple. I think I understand what you're saying. आप ये पूछ रहे हो शायद कि एक तरफ 25(2)(a बोलता है कि a state can make a law for whatever managing the secular activities, and 16(5) on the other hand says कि if the state makes a law saying that only a person of that faith will manage that institution or will be a head of the institution, then that will not be discriminatory, right? Is that the question? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, I got it. See, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों जगहों पे, पहले तो आप थोड़ा बैराक्ट अच्छे से अगर देखो तो वहां पे लिखा हुआ है स्टेट कैन मेक अ लॉ. ठीक है, स्टेट को कोई मना नहीं कर रहा है. एक बार हम आपको बैराक्ट भी दिखा देते हैं. सो इट इज द पावर ऑफ द स्टेट. ऐसा नहीं है कि 25(2)(a) है तो स्टेट को लॉ बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन द बैराक्ट फॉर यू. ओके, 25(2)(a) की वर्डिंग्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो इट सेज nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating the secular activity of a religion. ठीक है, so what they are saying is कि अगर state ने ऐसा कोई law बनाया है जिससे वो किसी religion की secular activity manage कर रहे हैं, regulate कर रहे हैं, या economic, financial या political activity regulate कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट वायलेट समबडीज फ्रीडम टू रिलीजन. ठीक है, इसीलिए इतने सारे केसेस में कोर्ट ने कई बारी कहा कि अगर ऑरोविल एक्ट आया है टू मैनेज दैट इंस्टीट्यूशन, द सेक्युलर एक्टिविटी, तो इट विल नॉट वायलेट 25(1). सिमिलरली इफ द कोर्ट इज सेइंग दैट रिफॉर्म के लिए, अगर सोशल वेलफेयर या सोशल रिफॉर्म के लिए अगर वो कह रहे हैं कि कास्ट विल नॉट बी अ बैरियर इन अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रीस्ट, तो दैट विल आल्सो नॉट वायलेट 25(1). ठीक है, अब आप जो बोल रहे हो 16(5) वाला डाउट, दैट आल्सो लेट मी शो यू. 16(5) भी ये बोलता है कि स्टेट अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है. ठीक है, सो you have to understand that it is the discretion of the state, that if the state does make a law saying that the incumbent of an office in connection with affairs of any religious or denominational institution will be a person professing a particular religion, then that will not violate Article 16. ठीक है, तो इशू यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्टेट ने ऐसा लॉ बनाया in which they said that for a priest to be appointed
there is no requirement that the priest should only be from the Brahmin caste, right? And they made this law under the power of 25(2)(b, जो स्टेट को पावर देता है कि अगर वो सोशल वेलफेयर या सोशल रिफॉर्म के लिए कोई लॉ बनाना चाहे तो दे कैन डू दैट, ठीक है? तो यहाँ पे द कोर्ट एक्सेस sorry, the parliament or whatever, the executive made a law, I'm not sure who did, but that law is protected under 25(2)(b, ठीक है? So it is not a case wherein they are saying, अगर आपके हिसाब से अगर ये केस होता कि if they would have said कि इस टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं या जो हेड हैं they will only belong to the Brahmin caste, then possibly the court would be looking into the angle of 16(5) also, okay? But यहाँ पे since those were not the facts, so of course 16(5) did not come into existence, okay? So it is upon the state कि state किसके अंदर law बना रही है, okay? तो 16(5) के अंदर ऐसे laws भी बना सकते हैं और ऐसे कई सारे laws हैं भी जहाँ पे major temples are run by, you know, a particular kind of people only. So those laws are also valid, but they are not made under Article 25. They are made under 16(5). Okay, I hope you understand the difference. कि वो मतलब Yes. depend करता है कि like law बना कहाँ पर है, ठीक है? But हाँ, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हो. If for example in any later case the issue does come कि 16(5) और 25(2)(b) में अगर conflict आए कि there were two laws, ऐसा जनरली मेरे ख्याल से होगा नहीं क्योंकि रिलीजन के मामले में nobody interferes that much, then maybe the court might have to decide कि अगर दो conflicting laws हैं तो फिर किसको preference देना है, whether 16(5) will prevail or whether 25(2)(b) will prevail. Okay, so Yes, ma'am. This is the question I wanted to ask. कि हाँ, मतलब conflict होगा तो. करेक्ट. सो बट अगेन ऐसा मतलब जनरली मैं बोलूँ ना तो रिलीजन के मामले में बहुत ही कोर्ट्स का इंटरफेरेंस भी कम होता है, बट दैट्स अ वेरी गुड एकेडमिक क्वेश्चन कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट देन व्हाट, राइट? सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द आंसर टू दैट लेज विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली कि वो किसको प्रेफरेंस देंगे. So yeah, it totally depends on, you know, the ideology of the judges also, because आइडियली अगर आप देखो तो 25(2)(b should be given preference, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की जनरल स्कीम देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन इज इन फेवर ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. It intends India to be a welfare country. It intends to reform all these casteist practices, all these sexist practices. So ideally 25(2)(b should be given you know, a better standing over 16(5), but let's see. I mean, if ever a case comes like this, then we'll get to know what the courts decide. But a very good question. Absolutely wonderful understanding of the constitution and how it relates with, you know, other parts also. Okay. Now let's come to Article 26. ठीक है? और किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Otherwise, we'll start at 26, जहाँ पे we'll be talking about religious denomination. तो अब हम आते हैं आर्टिकल 26 पे. इन लास्ट क्लास वी डिड सी व्हाट आर्टिकल 26 इज. So we saw that Article 26 is narrower than Article 25 because Article 25 generally gives a fundamental right to everybody, all persons, to, you know, have freedom of religion, freedom of conscience, etc. ठीक है? लेकिन Article 26 जो है वो particularly कुछ ही freedoms की बात करता है, and even more particularly it only applies to a narrower section. ठीक है? तो आर्टिकल 26 फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट टू, ठीक है, 25, 26 दोनों ही एक्सेप्शंस के साथ शुरू होते हैं. सो इट सेज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी नोटिस किया था कि यहाँ पे जो फोर्थ एक्सेप्शन था आर्टिकल 25 का, दैट इज अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, every religious denomination or any section thereof shall have the right to do this. ठीक है? To establish institutions, to maintain institutions, to manage its own religious affairs, to acquire property, own property, and to administer that property according to law. ठीक है? Generally इसमें 26B के बारे में एक क्वेश्चन आता है क्योंकि जो जनरल कॉन्फ्लिक्ट होती है वो इसके बीच में होती है, 25(2)(a and 26B. मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, but whenever the courts talk about 26B, they always talk about 25(2)(a also. ठीक है, ये आपके सबरीमाला केस में भी one of the issues was this also कि whether जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, क्या वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, क्योंकि अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो they will also have the rights given under Article 26.
ठीक है, जिसका मतलब होगा कि दे हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो उनका क्लेम ये था, जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स थे, उनका क्लेम ये था कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है एंड दे आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 26, एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 दे हैव द फ्रीडम टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। ठीक है, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इफ वी आर एक्सक्लूडिंग मेंस्ट्रुएटिंग women from entering into the Sabrimala temple, then they are doing that under the power given in 26B। ठीक है, तो कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स। उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि आप रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं हो। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला उसके लिए हम केस देखेंगे, क्योंकि जो डिसेंट था जस्टिस इंदु मल्होत्रा का, उन्होंने दूसरी रीजनिंग लगाई एंड शी सेड कि दे आर रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, बट वो डिसेंटिंग ओपिनियन था, तो एनीवे इट डजंट हैव अ बाइंडिंग अथॉरिटी। सो बट द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का मानना था कि जो टेस्ट लेड डाउन है एसपी मित्तल के केस में, उसके हिसाब से लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। तो पूरी बात यहीं पे खत्म हो गई सबसे पहले तो, क्योंकि अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन ही नहीं है तो हाउ विल दे क्लेम द राइट अंडर आर्टिकल 26। सेकेंडली उन्होंने कहा कि even if a religious denomination exists and they have the freedom to manage their own affairs, they are still subject to article 25(2)(a, ठीक है, and 25(2)(b also, ठीक है, a b दोनों, 25(2) in general। ठीक है, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला, उन्होंने कहा कि even though you will have the freedom to manage the affairs of your own religion, you will still be susceptible to 25(2)(a and b। यानी कि अगर स्टेट चाहे to make a law to regulate the economic, political, secular activity of your religion, or to bring in social welfare or social reforms, तो ऐसे केस में right to manage the affairs will or can be basically kept at a lower level। Okay, तो सबरीमाला के केस में this issue did come, and the majority of the judges said that 25(2)(a and 26(b) have to be read together। ठीक है, freedom to manage affairs is not absolute, and it is subject not only to public order, morality and health, but also to 25(2). ठीक है, so that was the basic understanding, और आपको I think 26 में इतना ही समझने की जरूरत है, क्योंकि बाकी तो it's quite straightforward। Okay, so one thing that you need to remember is the connection between 25(2)(a and b with 26(b) and who are religious denominations। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या या कौन से सेक्शंस को हम बोल सकते हैं कि ये religious denominations हैं। ठीक है, अब अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव, पूरा रिलीजन का जो मैटर है काफी सब्जेक्टिव है, ये जजेस की आइडियोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट रीजनिंग दे वांट टू एम्प्लॉय। ठीक है, सो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 25 इज अवेलेबल टू ऑल पर्संस, even an individual person can claim this right, लेकिन आर्टिकल 26 का जो राइट है इट इज ओनली अवेलेबल टू रिलीजियस डिनोमिनेशंस और देयर सेक्शंस। ठीक है, इसका मतलब है कि आर्टिकल 26 का जो राइट है वो ग्रुप राइट है, मतलब कोई एक इंसान जाके क्लेम नहीं कर सकता है, मतलब even if the one person is claiming, he should be claiming that on behalf of the religious denomination। So 26 is more or less a group right, but 25 can be a group right or even an individual right। अब एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द ओनली लैंडमार्क केस ऑन दिस। इस केस में कोर्ट ने 3 कंडीशंस ले डाउन करी थी कि दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन इज। ओके, तो क्या कंडीशंस हैं? उन्होंने कहा कि फॉर अ डिनोमिनेशन टू बी रिलीजियस डिनोमिनेशन अंडर आर्टिकल 26, फर्स्टली इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी कोई कॉमन फेथ हो। ठीक है, who have the same set of beliefs and who have a common faith, common being the keyword। second उन्होंने कहा it must have a common organization। third उन्होंने कहा कि उनका कोई distinctive नाम होना चाहिए, मतलब they should be known by some distinctive name। okay, अब टेस्ट ना तो ज्यादा क्लियर है और ना ही हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन रिलीजियस डिनोमिनेशन होगा। ठीक है, कोर्ट को अगर लगता है कि है तो है, वरना नहीं है। जैसे लॉर्ड सबरीमाला केस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, आप उसमें मेजॉरिटी का जजमेंट पढ़ो और आप उसमें डिसेंटिंग जजमेंट पढ़ो, तो आपको दोनों को पढ़ के लगेगा कि आप जिस टाइप की रीजनिंग लगाओ उस हिसाब से डिसाइड हो सकता है कि कोई डिनोमिनेशन रिलीजियस डिनोमिनेशन है कि नहीं। ठीक है, so it more depends on what the judges believe in rather than having an objective test, because
nothing about religion is anyway objective. ठीक है, तो सबरीमाला के केस में उनका कहना था कि जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स हैं वो कोई अलग से रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, दे आर बेसिकली हिंदूज ओनली, तो दे डोंट क्वालिफाई अंडर रिलीजियस डिनोमिनेशन बिकॉज नाइदर डू दे हैव अ डिस्टिंक्टिव नेम, neither do they have any other common faith which is slightly separate from the Hindu religion. So they basically believed कि SP Mittal का जो test है that has not been fulfilled in the case of followers of Lord Ayappa. Okay. Justice Indu Malhotra who dissented, उनका मानना था कि लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोअर्स हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, एंड दैट इज व्हाई दे शुड बी हैविंग द freedoms which are given under Article 26 as well. कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिसमें केसेस में एक्चुअली कोर्ट्स ने कहा कि ये वाले सेक्शंस जो हैं दीज आर रिलीजियस डिनोमिनेशन. ठीक है, सो आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, वैष्णवाज, all of these have been held to be religious denominations, and there are of course a lot more. हाँ ठीक है, अब जो हमने अभी बात की थी कि Article 26B should be read with 25(2), which was also talked about in the Sabrimala judgment. This is not it's not a recent understanding. Devaru versus State of Mysore के केस में 1955 में ही उन्होंने बोल दिया था कि 26B and 25(2) have to be read together. ठीक है, मतलब even a religious denomination does not have an absolute right to manage their affairs. Even they will be subject to any law which the state might make under Article 25(2). Okay. So any law which takes away the right of administration altogether from a religious determination and vests it in some secular authority would be violative of rights guaranteed under Article 26. ठीक है, तो Article 26 के हिसाब से अगर आप किसी religious denomination का right to administration entirely लेके उसे किसी और secular authority को दे दोगे तो that has been held to be violating 26B. Not that important, but yeah. So that is our discussion on Article 26. ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है. 27, 28 पे, as I said, there aren't many cases. On 28 we have the Bijoy manual case, which I think we have already covered in Article 19 discussion. Okay, so that sums up our discussion on right to religion. Now let me quickly tell you thoda sa about the two cases that I said in the starting we'll be taking up. That is a case of Shaira Bano versus Union of India, a 2017 judgment, and the case of Indian Young Lawyers Association versus Union of India, better known as the Sabrimala judgment, which is a case of 2018. ठीक है, दोनों ही 5 judge bench decisions थे, and they were decided. Shaira Bano was decided by a 3:2 majority, and Sabrimala case was decided by a 4:1 majority. ठीक है, यहाँ पे जो dissenting judges थे, they were Chief Justice of India, the then Chief Justice, Justice Keher, and Justice Abdul Nazir. और इस केस में the dissenting judge was Justice Indu Malhotra. ठीक है, restrictions of 25AB will apply to, yes, exactly, है ना? Yeah, that's what Devaru versus State of Mysore held, and that is also what was held in the Sabrimala case. कि religious denominations के पास freedom है to manage their own affairs under 26B, but 25(2)AB के अंदर अगर state कोई law बनाती है for religious denominations, then that will be a valid law. Okay. See, आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा सा और you need to understand it, कि we have seen that 25 is wider than 26. ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए कि जो religious denomination है, they are a larger part of religion only. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने देखा कि जैसे आनंद मार्ग या वैष्णवाज या आर्य समाज, these are religious denominations. ठीक है, but they are largely the part of Hindu religion only. कोई अलग religion नहीं है. Religious denominations जो हैं वो किसी एक religion का ही subsect होते हैं, right? तो state की जो power है Article 25(2) की, वो तो in general religion और religious activities पे apply होती है, right? So if it applies to this outer circle,
isn't it quite logical and obvious कि it will obviously apply to the smaller circle, right? I hope you understand the logic as to why it is subject to 25(2). ठीक है, क्योंकि वो religion का ही part है. बस 26 में उन्होंने religious denominations को हटा के थोड़े से और special rights दे दिए, but they are the part of religion only, and in general 25(2) के अंदर state can regulate religious activities, okay, and that is how they are connected. So that is it. Chalo. So now I was talking about शायरा बानो and the सबरीमाला case. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ब्रीफ ही बता रही हूँ मैं आपको, आप अपनी केस बुक से भी पढ़ लेना और जो और डिटेल्ड इश्यूज थे. तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2 जजेस डिसेंटेड बट 3 वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन ट्रिपल तलाक, सो ऑफ कोर्स इट वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, तो शायरा बानो के केस में इशू बहुत ही सिंपल था. शायरा बानो जो थी, उनका एलिगेशन था कि उनके पति ने उनको ट्रिपल तलाक देके ही हैज डिवोर्स्ड हर. ओके, तो वो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को ही चैलेंज कर रही थी कि दिस प्रैक्टिस इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वायलेट्स आर्टिकल 41, आर्टिकल 21 एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का कहना था कि जो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस्लामिक रिलीजन में ही इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, क्योंकि अब उन्हें थियोलॉजी में जाना पड़ा बिकॉज दे हैड टू सी कि वेदर ट्रिपल तलाक इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट. ठीक है, तो उन्होंने थोड़े कुरान के वर्सेस देखे एटसेट्रा एटसेट्रा, रिलीजियस टेक्स्ट देखे, एंड दे सेड कि कुरान में ही एंड इन इस्लामिक लॉ इटसेल्फ इट इज बिलीव्ड दैट ट्रिपल तलाक इज एन इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक. ठीक है, अगर आपको याद हो हमारे मुस्लिम लॉ के डिस्कशन, हमने देखा था वहां पे प्रॉपर होता है, मोस्ट प्रॉपर, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर तलाक होते हैं, है ना. तो तलाक, ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक बैन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड फॉर्म ऑफ डिवोर्स इवन बाय मुस्लिम्स आल्सो. उसको लीगल बनाया गया है, इट इज कंसिडर्ड टू बी लीगल, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड वे ऑफ डिवोर्स. ओके, तो कोर्ट ने वही सारी चीजें ऑब्जर्व की. उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन. फिर उन्होंने और भी 1937 के लॉ के बारे में बात की थी, वो मैं आपसे अभी नहीं करूंगी, वो आप जजमेंट की समरी में पढ़ लेना बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट हियर राइट नाउ. फिर इसमें जस्टिस चंद्रचूड का जो ओपिनियन था, सॉरी इसमें नहीं, हम वो उसमें यंग लॉयर्स एसोसिएशन में, ठीक है, हाँ, तो उनके हिसाब से ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है, दिस इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी. ठीक है, कोर्ट का मानना था कि इट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी and this is why they have struck it down. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ना तो ये essential है, neither is it protected by article 25 nor is it considered to be a good form of divorce by the Islamic law itself. ठीक है, फिर इस जजमेंट को इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट ने 2019 में एक लॉ बनाया which was the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, जिसके हिसाब से they said that triple talaq is a criminal offense and if anybody practices this form of talaq then they can be imprisoned up to 3 years. ठीक है, तो it is now even a criminal offense. तो कई सारे लोगों ने उसे चैलेंज किया है कि जो ट्रिपल तलाक का केस था शायरा बानो का, उसमें उन्होंने बस ये कहा था कि ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब आप इस तरीके से अगर डिवोर्स दोगे तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड डिवोर्स. तो पार्लियामेंट क्या उसे क्रिमिनल ऑफेंस बना सकती है. ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा हो. किसी प्रैक्टिस को स्ट्राइक डाउन करना और उस प्रैक्टिस को क्रिमिनल बना देना या इलीगल बनाना और क्रिमिनल बनाने में अलग होता है, मतलब दे हैव मेड इट पनिशेबल आल्सो. ठीक है, तो वो सारे इश्यूज कोर्ट हैज नॉट येट स्टार्टेड हियरिंग, सो वो देखते हैं द वैलिडिटी इज चैलेंज्ड एंड हाउ द कोर्ट डिसाइड्स ऑन द penal aspect of it. ठीक है, so that remains to be seen. Now let's quickly come to the सबरीमाला judgment. ठीक है, सबरीमाला के केस में 4:1 की मेजोरिटी थी. इसमें जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, she dissented. ठीक है, उनका डिसेंट काफी इंटरेस्टिंग है. I don't think, I won't comment on whether it is a logically sound dissent or not, but it was definitely interesting to read. Okay, तो इस केस में इशू ये था कि कई सारे इश्यूज थे एक्चुअली, हम बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे क्या इशू था. तो यहाँ पे रूल 3B था, एक केरला का कोई स्टेट रूल था. ठीक है,
जिसके हिसाब से it basically gave freedom to the religion to have these kind of exclusionary practices which are based on custom. ठीक है, तो इस केस में कोर्ट के सामने कई सारे इश्यू थे, तो कोर्ट ने सबसे पहले तो बोला कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, बिकॉज इट वायलेट्स द पेरेंट एक्ट एंड इट ऑल्सो वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, उनके सामने इशू ये था कि नो नॉट ईआरपी, उनके सामने इशू ये था कि वेदर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड अयप्पा आर रिलीजियस डिनोमिनेशन अंडर आर्टिकल 26 और नॉट, ठीक है। तो कोर्ट ने यहीं पे उस इशू को खत्म कर दिया, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। फिर वो बात भी हुई कि अगर होते भी रिलीजियस डिनोमिनेशन तो अलग इशू था, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि 25(2) के अंदर क्या कोई लॉ है 26B को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वहां तक मैटर नहीं आया, क्योंकि दे फाउंड दैट followers of Lord Ayappa are not religious denomination, and that is why they do not have the fundamental freedom which is given under Article 26. Okay, so they don't have any freedom to say that they can manage their own affairs as per 26B. So court again highlighted all these issues and it struck down Rule 3B of the state rules. Okay, it's a particularly Justice Chandrachud talked about another aspect. ठीक है, पूरा डिस्कशन तो इसी बात पे था कि जो प्रैक्टिस है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19, 21 एंड first of all they do not even have this right to manage their own affairs in the first place. Okay, Justice Chandrachud particularly talked about it from the standpoint of Article 17. ठीक है, उन्होंने कहा कि Article 17 prohibits, it has abolished untouchability, ठीक है। तो उनका मानना था कि excluding menstruating women or women who are of a menstruating age is basically related to the idea of impurity and untouchability, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये इशू सिर्फ आर्टिकल 14 या 21 को वायलेट नहीं करता है, बट इट ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 17, क्योंकि आर्टिकल 17 के हिसाब से कोई भी प्रैक्टिस विच परपेचुएट्स अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश। तो उनका मानना था कि excluding menstruating women from entering temples is an example of untouchability, and that is why the practice deserves to be abolished as per Article 17. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि Article 17 में, and he also referred to Constitutional Assembly debates, and he said कि Article 17 में सिर्फ caste based untouchability की बात नहीं है, although that is the majority of the untouchability that was being talked about at that point in time. But that does not mean that any other kind of untouchability or any other reason for untouchability cannot be covered under Article 17. ठीक है, तो उनके हिसाब से it also violated Article 17 of the Constitution. ठीक है, so ये उनका थोड़ा अलग opinion था. This is why we discussed. Then Justice Indu Malhotra dissented from the judgment. ठीक है, उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो और अच्छा मैं आपको मोरालिटी वाला तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, कि मोरालिटी जो टर्म है इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. दैट वाज आल्सो व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द सबरीमाला केस. ठीक है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सारे ही पॉइंट्स पे डिसेंट किया. उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोअर्स हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं. ठीक है, सो शी सेड कि दे हैव द फंडामेंटल फ्रीडम अंडर 26B टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये तो सही बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब ये नहीं है कि वी विल फॉरगेट दैट इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. ठीक है, तो उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है टेकिंग इनटू अकाउंट the nature of the Indian society, which is pluralistic in nature, and the fact that some religions or some people may find something to be moral and some may not. Okay, so what is morality in this context has to be decided keeping into account what kind of the society that we live in. ठीक है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला जो आर्गुमेंट था उससे she differed a little bit and she moved more to the line of what does one religion think. फिर उन्होंने कहा विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि जस्टिस चंद्रचूड़ का आर्गुमेंट था, उन्होंने कहा कि जो अनटचेबिलिटी है अंडर आर्टिकल 17 दैट वाज सपोज्ड टू कवर ओनली कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी. ठीक है, तो उनका मानना था कि ये जो प्रैक्टिस है ऑफ एक्सक्लूडिंग वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज दैट इज नॉट अ इंस्टेंस ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, तो उनका मानना था कि अनटचेबिलिटी की वजह से नहीं है, that is their custom. ठीक है, वो उनकी customary practice and this is why they do that and it is not
particularly untouchability under Article 70. ठीक है? So this was a brief of the 2 landmark judgments. अब currently क्या हो रहा है ये भी देख सकते हैं. ठीक है? शायरा बानो का केस तो ठीक है, ट्रिपल तलाक has been made illegal and not only illegal but punishable also. बट सबरीमाला का जो जजमेंट है दैट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ फ्लैक. ठीक है, आपको अगर याद हो उस टाइम के न्यूज रिपोर्ट्स, तो after the judgment a lot of women activists and NGOs, you know, they tried to go to the temple and they were not allowed to enter in. ठीक है, I remember there were 2 journalists who actually did manage to go in, female journalists, and that basically just blew out of proportion. ठीक है, तो essentially कई सारे religious groups ने रिव्यू पिटिशन फाइल करी अगेंस्ट द सबरीमाला जजमेंट, सेइंग दैट इस जजमेंट की रिव्यू की जरूरत है बिकॉज ये नहीं हो सकता है ना. और इन एसेंस वो एक्चुअली कभी एनफोर्स हुआ भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि women were actually allowed into the सबरीमाला टेम्पल. ठीक है, तो द कोर्ट हर्ड द रिव्यू, कोर्ट ने रिव्यू सुना एंड कोर्ट ने ये भी देखा कि जो राइट टू रिलीजन और पर्सनल लॉज और एंटरिंग इनटू रिलीजियस प्लेसेस का जो इशू है इन जनरल, ये इशू ऑलरेडी एक बड़ी बेंच के पास पेंडिंग है. ठीक है, मतलब एक बड़ी बेंच है, मोर देन 5 जज बेंच, which is already hearing similar matters. तो उनका मानना था कि जब उस बेंच का जजमेंट आएगा, अगर वो सबरीमाला की रीजनिंग से अलाइन नहीं करा, तो there will be a conflict between the judgment in Sabrimala and the one that will be given in a larger bench. ठीक है, तो इस supposed ground पे उन्होंने रिव्यू अलाउ कर दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी वी आर नॉट रिव्यूइंग द जजमेंट बट दे स्टेड द सबरीमाला जजमेंट ऑफ 2018. ठीक है, सो दैट इज अ वेरी सैड थिंग व्हिच हैपेंड, दैट डिस्पाइट द जजमेंट इन सबरीमाला केस, in a review it has been stayed, and abhi we'll have to just wait for a larger bench decision to see how the issue of religion, personal laws and in general discriminatory practices is addressed. Okay, so as I said, the whole thing about this is something which the courts don't want to get in, the legislature does not want to get in, and the executive does not want to get in. So we will have to see what the judgment will be in the coming time. Okay, so I think this sums up our discussion on right to religion. Baki agar koi case aayega to we will definitely be taking it up. Okay, so now we need to cover cultural and educational rights. मैं ब्रीफ में आज बेयर एक्ट आपको बता दूंगी, नेक्स्ट क्लास में we will be discussing the case laws on that. Okay, meanwhile take 2 minutes, see if you have any doubts in whatever we have covered so far. Okay, so now we start with another set of fundamental rights, that is cultural and educational rights. ठीक है, this is the second last set of rights. इसके बाद हमारे बचेंगे right to constitutional remedies, जिसमें we will be talking about Article 32, which basically, you know, gives Supreme Court the power to actually hear about the violations of Articles 12 to 35. So the second last set is that of cultural and educational rights. ठीक है, तो 29 और 30 जो है ये essentially minorities के rights की बात करते हैं. ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि minorities को ऐसे अलग से rights क्यों दिए हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो उनको कोई अलग से rights नहीं दिए हुए हैं. जो भी rights हैं, those rights are available to the majority also. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अलग right उनको दे दिया which is not given to the majority. Okay, the only difference is that it was when the constitution was being made and discussed, they realized कि जो India की minorities हैं, if we want to make India a developed country, a country which is governed by the constitution, then we need to ensure कि जो majority का influence है कहीं वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि minorities are not allowed to preserve their own culture. ठीक है, so just to give them an additional protection from being influenced, क्योंकि किसी भी country में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, किसी भी country में there is always a conflict between majority and minority, right? The views and cultures of the minority may be suppressed by the majority by the sheer reason that majority is in majority, right? तो इसीलिए 29 and 30 guaranteed some kind of protection. ठीक है, तो ये कोई additional rights नहीं है, they are simply protections so that minorities are able to
continue on with their practices, they are able to continue with their culture and whatever they believe in. Okay, so that is the whole reason why 29 and 30 are given. So it is not really a case of additional rights, but more of, protecting the rights that they already have. So by that understanding, let's move on to discuss Article 29 and Article 30. ठीक है, सबसे पहली बात तो Article 29 is not even about minorities, even though it says so. It says that it talks about protection of interest of minorities, but जब आप Article 29 पढ़ोगे तो आपको realize होगा कि ये minorities की बात कहीं कर ही नहीं रहा है. ठीक है, 29 क्या बात कर रहा है? 29(1) बात करता है, and I hope 29(2) आपको याद हो, क्योंकि ये हमने पढ़ा था जब हम Article 15 पढ़ रहे थे. ठीक है, स्पेशली जब हमने देखा कि 15(4) कैसे आया. अगर आपको याद हो चंपाकम टू रायराजन का केस, जहां पे कास्ट के बेसिस पे वो रिजर्वेशन दे रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि 29(2) के अंदर तो लिखा हुआ है कि आप कास्ट के बेसिस पे किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो फिर ये वाली पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना. तो इसी की वजह से आर्टिकल 15(4) आया था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस नहीं दे सकते बिकॉज इट इज नॉट परमिसिबल एज पर आर्टिकल 29(2). ठीक है, तो मैं 29(2) पे अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आई एम गोइंग बाय द अंडरस्टैंडिंग कि आपको वो सारा डिस्कशन याद होगा. ठीक है, मैं 29(1) पे फोकस करूंगी, विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग. ठीक है, नॉट माइनॉरिटी राइट्स बट प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग एल्स. ठीक है, आप क्या बोल रहे हो? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन्स के पास है ये राइट. एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own, ठीक है, shall have the right to conserve the same. Okay, तो as you can see कि पहली बात तो it is not a minority right. ठीक है, ये कोई मेजोरिटी भी क्लेम कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज के पास ये राइट है. और दूसरी बात, इट इज सिंपली एन अश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, कुछ अलग से उनको राइट्स नहीं दे रहे हैं, वो बस ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं जो कहीं पे रह रहे हैं इंडिया में, और अगर उनकी कोई भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है या डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो उनके पास राइट है कि वो अपनी इस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व करें. ठीक है, तो कोई एडिशनल राइट तो नहीं हुआ ना, वो तो बस ये बोल रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है तो दे सिंपली हैव द राइट टू कंजर्व इट. ठीक है, तो ना तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है, इट अप्लाइज टू मेजोरिटी ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक डीएवी जालंधर का एक केस था जहां पे इट वाज अबाउट द पंजाबी लैंग्वेज. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि पंजाबी लैंग्वेज इज अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड इट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर 29(1). Okay, so that doesn't mean that it will only apply to minorities in India. It can be made applicable to majorities as well. The only condition is that the language, script or culture should be distinct. ठीक है, so that is 29(1). 29(2) हमें already पता है. ठीक है, so 29 is not the section article on which you will find case laws. The article on which you will find case laws is Article 30, क्योंकि that in true essence talks about rights of minorities. ठीक है, 29 doesn't really talk about right of minorities. Okay, अब हम बात करते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज की फॉर पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, तो 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो हमें इससे क्या क्या बातें पता चली कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज का राइट है, क्योंकि जब हम अंदर पढ़ेंगे तो वी विल सी दैट यस इट डज अप्लाई ओनली टू माइनॉरिटीज. ठीक है, दूसरी चीज, इट अप्लाइज ओनली टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उसमें भी दो राइट्स हैं उनके पास, टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टू एडमिनिस्टर इट. ठीक है, आई होप आपको दोनों टर्म्स का मतलब पता हो, डिफरेंस पता हो. एस्टैब्लिश करने का मतलब होता है कि वो किसी स्कूल या किसी कॉलेज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. एस्टैब्लिश मतलब यू कैन मेक इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, यू कैन एस्टैब्लिश इट. एडमिनिस्टर करने का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को एस्टैब्लिश कर लिया है, अगर आपने एस्टैब्लिश नहीं भी किया है, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो आपके पास राइट है उसको एडमिनिस्टर करने का. एडमिनिस्टर मतलब उसको चलाने का, कि उसका मैनेजमेंट क्या होगा, उसमें कौन से टीचर्स अपॉइंट होंगे, उसमें क्या करिकुलम होगा, आप उसमें क्या पढ़ाओगे, आप उसमें किसको पढ़ाओगे. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का राइट भी आपके पास होगा.
ठीक है. सो दैट इज बेसिकली आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट. तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जिसपे आपको एक्चुअली सारे जजमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PA नामदार, इस्लामिक सोसाइटी, सेंट स्टीफेंस, ठीक है, कई सारे जजमेंट हैं. देयर आर आई थिंक एटलीस्ट 8 to 10 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन दैट. तो वो सारे आर्टिकल 30 क्लॉज 1 पर ही हैं. ठीक है. तो अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे वो कौन सी माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट दे आर सेइंग इज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. ठीक है. तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट religious minorities and linguistic minorities. ठीक है. तो अगर कोई minority है on the basis of religion या फिर on the basis of language, तो उनको ही आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा. ओके. Yes, Shivam, it does apply to madrasas also because Muslims are a minority in India. Okay. So yeah, madrasas will be covered under article 30 clause 1. So yeah, that is what they are saying. कि all minorities, whether based on religion or language, यानी कि religious या linguistic minorities, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. ठीक है. सारे words important हैं. Establish का मतलब पता होना चाहिए, administer का मतलब पता होना चाहिए, इस phrase का मतलब भी पता होना चाहिए. Of their choice. Of their choice का मतलब ये है कि वो जिस भी चीज के लिए खोलना चाहे वो खोल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो इट विल हैव टू डील विथ देयर ओन रिलीजन और देयर ओन लैंग्वेज और देयर ओन कल्चर ओनली. ठीक है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो किसी भी टाइप का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं. क्रिश्चियंस आर अ माइनॉरिटी इन इंडिया एंड दे हैव आई थिंक कैथोलिक स्कूल्स throughout the country. Like I was also taught in one of them. Right. So ऐसा तो नहीं है कि they are only teaching about Christianity or it's an institution about Christianity, their religion. They can open any kind of education institution. ठीक है. Dealing with primary education, secondary education, a college or anything of that sort. ठीक है. So that is what it means. Their choice का मतलब होता है actually उनकी choice है. ऐसा जरूरी नहीं है कि the institution should relate to their minority character. Okay? That is absolutely not there. All that is required is that the minority should be either religious minority or linguistic minority. ठीक है. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई माइनॉरिटी है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल a Punjabi speaking person may be a minority in the south, right? क्योंकि Punjabis are a majority only in the state of Punjab. They are not a majority in, let's say, the state of Kerala. ठीक है. So Punjabis can be a linguistic minority in the state of Kerala. ठीक है. तो हम केसेस देखेंगे जहां पे कोर्ट ने बताया कि आप किस यूनिट से डिटरमाइन करोगे कि कोई रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या नहीं. ठीक है. तो कोर्ट ने कहा हम स्टेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किसी स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से, ऑफ कोर्स 50% से ज्यादा अगर किसी की पॉपुलेशन है तो दैट विल बी अ मेजॉरिटी, और अगर 50% से कम है तो दैट विल बी अ माइनॉरिटी. ओके. तो वी विल लुक एट दोस केसेस. अब आपको बाकी के जो केसेस देखेंगे वो होंगे ऑन द इशू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. कि व्हाट डज इट मीन बाय एडमिनिस्ट्रिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. ठीक है. एस्टैब्लिश का तो चलो ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब नहीं है, पर एडमिनिस्टर का क्या मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, and whether administration or the right to administer also include a right to maladminister. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जहां पे एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, तो क्या इसका मतलब ये है कि दे कैन maladminister the institution, that they can not treat the students equally, or they can not have a proper curriculum, or they could not have proper teachers. Okay. तो कोर्ट ने इन सारी बातों के बारे में कई सारे केसेस में बात करी है. And those line of cases are actually quite important. ठीक है. तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, wherein we will talk about कि right to administer का क्या मतलब होता है, और क्या right to administer का मतलब होगा कि स्टेट कोई लॉ नहीं बना सकती. क्योंकि आपको इन जनरल पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं उनपे भी स्टेट के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, है ना. जैसे कि अगर CBSE का कुछ करिकुलम है तो इट विल अप्लाई टू गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो, प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो, राइट. अगर स्टेट ने कोई और लॉ बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल जो नीट का एग्जाम होता है, नीट जो आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, वो प्राइवेट
मेडिकल कॉलेजेस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, मतलब वो भी एडमिशन बिना नीट के नहीं ले सकते, उनको भी नीट के स्कोर कार्ड से ही एडमिशन लेना होगा। तो डज दैट मीन कि इट इज वायलेटिंग द राइट टू माइनॉरिटीज, ठीक है। तो हम देखेंगे कई सारे केसेस में कोर्ट ने बताया कि किस टाइप का स्टेट रेगुलेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पे हो सकता है, ठीक है, व्हाट इज परमिसिबल एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है। एसेंशियली उन्होंने ये डिफाइन किया कि राइट टू एडमिनिस्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। Okay, so TMA Pi and PA in Amdar, I think, will be the two landmark cases that we will be discussing extensively in the next class. Okay, so that is 31. Most of, I think not most, all of the cases that we'll be seeing will be on 30 clause 1. ठीक है, अब 30 clause 1A और 2 भी देख लेते हैं, although उनकी कोई ज्यादा relevance नहीं है except for knowing the bare act of it. Okay, 30 clause 1A बस ये बोलता है कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हो, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप उन्हें एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन दो, सो एज टू इंश्योर दैट उनका आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का राइट वायलेट ना हो, ठीक है। तो एज यू कैन सी कोई अलग राइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो बस ये बात कर रहे हैं कि कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में देयर शुड बी एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन, ठीक है। सो इन मेकिंग एनी लॉ providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause, ठीक है। तो बस किस चीज की बात कर रहे हैं, फेयर कॉम्पेंसेशन की, टू एंश्योर कि ताकि स्टेट सी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में वही डर उनको रहता है कि क्योंकि दे आर इन माइनॉरिटी, तो द स्टेट इन जनरल शुड नॉट बी suppressing their rights. So that is the only reason why they have stated कि they should be receiving adequate compensation in the cases of compulsory acquisition, ठीक है। फिर टू बी प्रोटेक्शन ही है, इट इज नॉट एन एडिशनल राइट। वो बस ये बोल रहे हैं कि जब स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड देता है, ठीक है, आपको पता है कि स्टेट के खुद के गवर्नमेंट स्कूल्स तो होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो ग्रांट एड्स टू अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं। तो वो बस ये बोल रहे हैं कि जब स्टेट एड देगा तो इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड अ नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कोई एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं है, वो बस ऑलरेडी इम्प्लिसिट बात को एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं that the state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language, ठीक है। बस ये बोल रहे हैं कि minority institutions के बीच में आप discriminate नहीं करोगे, ठीक है। So that is 30 clause 2.